Appearing as a small black disk before the Sun, Venus began its historic transit as it came between the Earth and the Sun. The planet named after the Roman goddess of love and beauty is incidentally also the closest planet to the Earth. ये जो ब्लैक स्पॉट जो आपको सूरज के दरमियान नज़र आ रहा है, ये असल में यही वीनस है। तो वीनस जो है आपको पता है कि हमारे निज़ाम शमसी का एक बहुत ही अहम सैयारा है। वीनस जो है जिसको हम जो है ज़मीन की बहन भी कहते हैं, इसलिए बहन कहते हैं कि इसका जो साइज़ जो है वो तकरीबन हमारे अर्थ के बराबर है। The 6-hour 40-minute transit began at sunset on Tuesday in eastern North America and northwestern South America and was seen as a small black dot on the solar surface from Hawaii. The transit was also visible in East Asia and the Western Pacific, although poor weather conditions spoiled the view for some. The stellar treat could be viewed in Pakistan from the time of sunrise till 9:50 a.m. People in Peshawar and Islamabad could view the treat without any hindrance, while the people of Karachi and Lahore faced trouble in viewing the transit due to cloudy weather conditions. Sporting proper eye-shielding material, eager skywatchers followed the advice of Suparco while viewing the transit so as to avoid blindness and other such problems while viewing the sun. This transit wasn't just an interesting experience for people across the world, it was an important once-in-a-lifetime event for astronomers receiving education and conducting research on the subject. लेफ़्ट टॉप पे जो डॉट जो नज़र आ रहा है वो हमारा वीनस है। तो असल में जो स्पेस के हवाले से हमारी जो स्टडीज़ हैं उसमें ये काफ़ी हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। हमारे जो रिसर्च वर्क होता है एनवायरनमेंट के हवाले से, फर्कियात के हवाले से, स्पेस साइंस के हवाले से, तो उस सिलसिले में ये हमारे लिए मददगार साबित होता है। Experts say this event will now be witnessed 105 years later, meaning this once-in-a-lifetime event can be witnessed by coming generations in 2117.